Hello. 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 Yes. Ansh. Put on your cameras. Yes. Can you see board properly? Hello. Ansh? Yes, ma'am. Yes, okay. Come on the screen. Okay. Last lecture, what we did? What we studied last lecture? So what? Karthik? Hello. Ma'am, we did that interest Okay. and balance of current account. Ma'am, Interest? Yes, yes. Interest on capitals we have studied, right? What if interest on current and capital, both the accounts when we provide interest, what will be the accounting practice, right? ma'am, we have to start from interest on drawings. Yes, we have to start from interest on. Now, here in this topic, what we are going to learn is, I told you in the last lecture itself, that when the sum is yes, मैम आपकी आवाज थोड़ी एको हो रही है. echo हो रही है, क्यों? Hello, बच्चे. मैम आवाज आ रही है, मतलब बस ये बोल रहा हूँ. Now, okay? हाँ मैम. Okay. So, what I told you already in the last lecture that when the sum has given you the number of days, calculation based on the number of days will be calculating interest by 365. Okay. When the sum is telling us, has given some information related to months, then we will do calculation as per the months. Months Say, 12. okay, say they'll say Ansh have drawings for the 3 months. So we'll be calculating as per the month's calculation. Okay. See the details here. Illustration 30. Illustration 30. Okay. Now in a partnership, partners are charged interest on drawings at the rate 15% per annum during the year ended 31st March 2021. Partners drew as follows. Okay. Now, in this case, Ansh, can you say illustration 30? Yes, ma'am. Okay. Now they have given you the different dates, like in which particular month, how much amount has been withdrawn from the form. Okay. Now, in the month of 1st May, 20,000 has been withdrawn. In the month of August, 50,000, and so on. So now what we will do is, see, we will write 2020, okay, 1st of May, 1st of August, 30th of September, 31st of Jan, this is for the 21, then 31st of March, 2021. Clear up to here? 1st of May, how much amount is withdrawn? Karthik, 20,000. 20,000. 1st of August,
50, Now, next 20, 20, 60, then 60, 20. then 20. Okay. Now, for these particular months, from May, how much comes to 31st March? Ansh, Yes, ma'am. अभी अगर उस पार्टनर ने 1 मई को 20,000 लिया है, so till 31st of March, till 31st of March 2021 कितना अमाउंट हो जाएगा, कितने मंथ्स हो जाएंगे टोटल? 11. May, June, July, August, 11. September, October, November, December. 11 months. For this, August, September, October, November, December, January, February, March. How much? 8 months. First, how much? 6. Next, 6. 6. 6. For this, 31st March, 2. 2. 31st March. Ma'am. How to? This is January, February. 4, Ansh, don't take it on for 31st of January. How much months? February and March. February and March. Will you consider month of Jan? Will you No, ma'am. consider month of Jan? No, ma'am. Okay. So February and March, just 2 months. And 31st of March means 0 months. We are calculating for 31st March 2021. Okay. Now what we will do for 20,000, see the calculation part, 20,000 into 15% into 11 months. Tell me the amount. You will do all these 4 with the same calculation. Show me fast. Ma'am, 11 or 8? 11? Ma'am, we have to, calculate with respective of months, na? 11. This will become 50,000 into 15 upon 100 into 8 upon. Yes, ma'am. Do it fast. Unfinished first calculation. No, ma'am. Show your notebook, Ansh. But Where is your calculation part? ma'am, I'm doing. Still be. Do it fast.
Karthik, you finished? Show me your calculation. Okay. Finished? Sure. Tell me what is the amount in the first term? Ash, show your calculation. For the first one, it is 2750. Show your calculation now. Okay. What is the amount? 50. 2750. Karthik, for the 50,000? 5,000. What? 5,000. 5,000. For 20,000? 1,500. And 1,500. for 60,000? For 60,000, one. How much? Same 1,500. Yes, ma'am. This total comes to 10,750, right? So the total interest amount is what? Interest for drawing is how much? 10,750. Understood? Finish writing. Yes, ma'am. Karthik, finished? Yes, ma'am, done. Okay. Now, in this case, they have given us all the dates, okay? But there are few sums where they will not give you the specific date or anything, okay? They will just tell you that the drawings are made on every first, in every first week of the month, or drawings were made in the middle of the month, or drawings were made at the end of the month, every month. In that case, what you will do? How much month calculation we will do, right? For that, in that case, we will use average period method. Okay. So for this, you have to remember the thing. On the page number 152. Come on the 152 page number. Hello. Okay. See here. What is
is our formula is interest for drawings. What we always do is equal to amount of the drawings Ma'am, into rate. Into rate. Can you hear me? Hello? ma'am, your camera is off. Okay. Interest on drawings is equal to always the amount multiplied by rate into period. Correct? Perfect. Followed? Period में हम लोग को मालूम रहता है सम में that it is for 12 months, it is for 2 months, it is for 3 months, or if they give you the months, like how in the previous sum they had given us 1st of May को drawings किया है, 31st of Jan को drawings किया है. In that case, we can easily count the number of months and we can charge it, right? लेकिन कुछ sums में जब हम लोग को नहीं दिया होगा, in that case what we will do? See here. If the partner withdraws fixed amount in the beginning of every month. Beginning of every month. हम कौन से What we पेज will do? See 152. illustration? Yeah. No, not illustration. I'm teaching you the theory part. Listen here, don't see your textbook. अगर पार्टनर कोई भी बिगिनिंग ऑफ द एवरी मंथ को विड्रॉल्स करता है एनी ड्रॉइंग्स, सो वी विल ऑलवेज कंसीडर द average period of drawing as 6.5 months. Understood? ठीक है, तो अगर उस सम में से दिया है पार्टनर यूज्ड टू विथड्रॉ सो एंड सो अमाउंट एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, तो हम लोग क्या करेंगे, अमाउंट इनटू रेट इनटू पीरियड कितना लेंगे हम लोग, 6.5 अपॉन 12, 6.5 अपॉन 12. समझा? अंश फॉलोड? ओके. सेम वे अगर एंड में लेता है वो end of every month, then what we will take, then how much will be our amount? 5.5 months. And if you take in the middle of every month, then always 6 months. समझा यहाँ तक? This is very important. 5.5 months क्या है? टाइम है. मैंने क्या बोला, अगर कोई सम में if they are not giving you a specific month कि ये सोनी ने, राजा ने, टिक्कू ने ये मंथ में ड्राइंग्स किया है, अगर ऐसा नहीं बोलते, then instead they only tell you that Tikku used to withdraw money at every end of the month. ठीक है, तो हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? वी शुड हैव सर्टेन नंबर ऑफ मंथ्स. ओके, वी विल कंसीडर 5.5 मतलब 5.5 अपॉन 12. अंश समझा? ओके. अगर वो बोलते हैं मिडिल ऑफ एवरी मंथ विड्रॉल्स करते थे, देन वी विल कंसीडर 6 मंथ्स, 6 अपॉन 12. अंडरस्टूड? कार्तिक समझा? ओके, एग्जांपल्स करेंगे तभी और अच्छे से समझेगा. सी नाउ इलस्ट्रेशन 31. लिख के रखो अंश एंड कार्तिक, राइट दिस मच, दिस पार्ट इन योर नोटबुक, और ऊपर हेडिंग देना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स. ओके, मैम टेक्स्ट बुक में लिख लूं? किसमें? नोटबुक. नोटबुक में you have lecture after my lecture? Yes, ma'am. Okay.
मैम आपका कैमरा बंद हो। 1 second. Finish? नहीं मैम, अंश लिखा? नहीं मैम, एक लिखो लास्ट। जल्दी. ओके ओके. हाँ मैम। ओके. Okay. See illustration 31. Interest on drawings. Illustration 31. A partner draws rupees 10,000 per month under partnership deed. Interest is to be charged at the rate of 15% per annum. Calculate interest that should be charged to the partner if the drawings are made. First case दिया है in the beginning of the each month, in the middle of the each month, and at the end of the each. Okay. Now कितना drawings है अंश? 10,000 per month. Okay. In the beginning, कितना मेरा 10,000 per month दिया है. तो बिगिनिंग रहेगा तो हम लोग को क्या करना है? अमाउंट into rate of interest into how much? Ansh, tell me. 6.5 upon 12. 6.5. 6.5 upon 12. Calculate and tell me. 6.5 means, can I say 6.5? पर फिर मैम डेसिमल में नहीं आएगा क्या आंसर? What? पर फिर डेसिमल में आएगा ना आंसर? हाँ. See, I'll tell you. नहीं आएगा. Not in decimal. This is 100. Okay. If I convert this into decimal, that is 6.5. So this will become 120. Correct? क्या कैसे मैम, समझा नहीं. कार्तिक यहाँ देखो. कार्तिक. हाँ मैम, मेरे को आ गया आंसर. 6 अपॉन, बता मुझे कैसे दिया. मैम ये देखो. Explain, no, don't show. Explain. मैम 10,000. मैम एक मिनट, थोड़ा साइड.
मैम जो 100 है उसके 2 जीरो 10,000 से डिवाइड कर दिया एंड 15 और 12 को सिंप्लीफाई किया। और क्या किया? 15 को 3 से डिवाइड किया तो 5 बचा। 3 4 4 4 बचेगा हाँ, और इधर 5। देन अब कैलकुलेटर से कर दिया व्हाट इज द आंसर? मैम। द आंसर इज 812.5। This becomes 4 ones are 4, 4 twos are 8, 4 fives are 20. So this becomes 25 into 5 into 6 and half. Correct? कितना कर सकता है अभियांश? क्या मैम? हाँ हाँ This you can tell me the answer. हाँ मैम। Finished? नो मैम। मैम। Yes. मैम बट इधर बुक में तो कुछ और ही आंसर आ रहा है। What is the answer? 9,750। One second. अरे पूरा साल का लेना है ना, we'll multiply that. You tell me the answer first. इसका बोर्ड पे जो लिखा है। One second. This was given per month, no? यस मैम। Then we were supposed to multiply it by 12 first. तो मैम उसका तो 812.5 आ रहा है। No, wrong. 10,000 means 1,20,000 into 15 upon 100 into 6.5 upon 12. मैम वो 812.5 को इंटू 12 किया तो बराबर आंसर आ रहा 8? है। 812.5 जो आया था ना एक मंथ का, उसको इंटू 12 किया तो बराबर आंसर आ रहा हाँ करेक्ट। कार्तिक का क्या रॉन्ग हो गया? मैम मैं तो 10,000 लेके कर रहा था। 10,000 वापस से एक बार करो। मैम आपने अभी इसके पहले वो 10,000 लेके करा था ना। हाँ हाँ तो मैम मैंने भी वही लेके किया। See, when 1,20,000 है, this is half means we can say this becomes 6.5. हाँ मैम। Correct? यस। Okay. Or instead of writing this decimal, if I try to take out this decimal point, this becomes, we have to add 1 zero at the denominator. यस To simplify this, two zeros cancel. This 1 0 cancel. मैम ये तो Then मैं समझ गया, कैलकुलेशन आता है मैम, बट आपने then पहले 10,000 लिखा था ना उधर। see, first you can calculate as per 10,000 also, then find out the amount and then you can multiply it by 12 for ओके। the full year, no? क्योंकि पूरे साल के लिए हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं। 10,000 was for only for 1 month, Karthik. यस मैम। Okay, so you can do both the ways. If you can calculate first only multiplied by 12, or after getting the answer you can also multiply. यस मैम। Okay, both the ways are right. Then multiply.
Okay, same question in the middle. In the middle of year, how much amount we will calculate? 1,12,000 into 15%. Karthik, how much? Middle of the year? Ma'am, 6. 6 upon 6 ones 6 twos are 12. These two zeros cancel. 2 ones are 2. 2 6 are 12. 600 multiplied by 15. What is the answer? 9,000. 9,000. Third case. At the end of every month. Correct? Lunch क्या आएगा अभी? End of the every month means? 5.5 upon Very 2 divided 5.5 upon 20. What is the answer? 8250. Ansh, calculation. 8250. You did? Show me a book. मैम एक्चुअली कैलकुलेटर से किया था. ठीक है, finished? Karthik, समझा? Yes, ma'am. And you understood? Yes, ma'am. Now fourth, if the amount is withdrawn in the beginning of each quarter during the year charged on total drawings for the period of 7.5 months. This usually, these last one doesn't come for your exams. These three are very important at the beginning, at the middle, in the middle, and at the end of the every. It normally comes for the exams, okay? But still, see here, more 3 cases are given. So every quarter में अगर at the beginning करेंगे तो what we will charge in every quarter. At the middle, if they'll withdraw the sum amount, then what you will charge, which average month you will take. See here, question number, line number 4. If fixed amount is withdrawn in the beginning of each quarter during the year, interest is charged on total drawings for the period of 7.5 months. ठीक है? Every quarter अगर beginning में withdraw कर रहे हैं तो 7.5, right? If they are withdrawing in the middle of the year, then it is fixed. That is for 6 months. Okay, and at the end of the every month, we will take average month as 4. वाईफाई लिया है. हेलो. Yes, ma'am. Okay. See, every quarter. अभी हम लोग क्या करते थे? Every month. This is every quarter. अगर beginning में है
मिडिल में है एंड एंड में। बिगिनिंग में रहता है क्या 6.5, मिडिल 6, at the end is how much 5.5. Am I right, Karthik? Yes, ma'am. Correct. अगर क्वार्टर है, एवरी क्वार्टर, देन व्हाट वी विल डू, एवरी बिगिनिंग है देन 7.5, मिडिल है इट विल बी सेम। Ma'am, quarter क्या एंड होता है? योर कार्तिक, What is quarter? quarter means how many months? पता नहीं ma'am. Karthik, quarter means how many months? And 3 months. what, Karthik? Understood? Karthik, whom you are talking? Who is sitting next to you? Ma'am, nobody is sitting. Fine. Understood? अगर drawings every month है and at the beginning of the month 6.5, 6 months, and at the end what 5.5. 5.5. If every quarter मतलब अगर हर 3 महीने में एक बार ले रहा है, फॉर एग्जाम्पल अच्छा, समझा. फाइनेंशियल ईयर हमारा स्टार्ट कभी होता है मंथ ऑफ अप्रैल, April. राइट? तो 1 अप्रैल को पार्टनर ने विड्रॉल्स किया है, साइन किया है, 1 Yes, अप्रैल ma'am. को। सो अप्रैल मई जून तक वो कुछ ड्राइंग्स नहीं करेगा, करेक्ट? अगर Yes, ma'am. जुलाई 1 जुलाई को वो वापस ड्राइंग करेगा, देन अगेन जुलाई अगस्त सितंबर ही विल नॉट मेक एनी अदर ड्राइंग्स, ठीक Yes. है? फिर 1 अक्टूबर को अगेन ही विल मेक सम, ठीक है? सो 3 मंथ्स में ही उनको ड्राइंग देना अलाउड है। ऐसे वहां पर पार्टनरशिप डीड में स्पेसिफाई करते हैं, कुछ डीड फॉर्म्स रहते हैं उसमें। सो अगर एवरी क्वार्टर कर रहा है, मतलब अगर हर एक 3 महीने में कर रहा है, एट द बिगिनिंग सो 7 पॉइंट, Point five. देन सेकेंड समझा मैम. एंड पर 4.5। गुड। Yes, ma'am. कार्तिक अच्छे से समझा? Yes, ma'am. अंश, Yes, वेयर ma'am. आर यू? समझा? Yes, ma'am. Okay. Say illustration 32. Calculate interest on drawings of Siddhant at the rate of 10% per annum for the year ended 31st March 2021 in each of the following alternative cases. If he withdrew 6,000 in the beginning of each month, कितना लिया था उसने? 6,000. 6,000, right? One second. Okay. 6,000 means how much it becomes for the full year? 72,000. 6,000 वो every quarter 3 months में ले रहा था, Quarter. पूरे साल में, मतलब 12 महीने 3 मंथ्स डिवाइड करोगे तो कितने बार 24. करना पड़ेगा? हाँ, 4 टाइम्स ना, 4 into 6 means 24,000। हम लोग ने प्रीवियस केस में मल्टीप्लाइड बाय 12 किया था ना? Yes, ma'am. ओके, इसमें क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाइड बाय 4। ओके, नाउ 24,000 first case. Okay, we will solve this one. In first case 24,000, you have to show on Karthik and Ash that 6,000 multiplied by 4, 24,000, 24,000 into the beginning bola hai na, so what 10% is the rate and how much 7.5 upon 12. Tell me the calculation. Ansh, Yes, ma'am. One. tell me. Ma'am, 1,500 शायद. सही है. 1,005. Very good.
is my total interest. Okay. In second case, if he withdrew 6,000 at the end of each quarter. Second case क्या है? At the end of each quarter. Same amount, 6,000 है. So multiplied by 4 only. So 24. And what is average month per? What, ma'am? And what is the average month should multiply with? 4.5. Okay. Tell me the answer. 900. 900. Is it? Okay. And in the third case, if you withdraws 9,000 in the middle of each quarter. In the middle of each quarter. 9,000 he was withdrawing, right? So multiplied by 4, 9 4 is how much amount? 36,000. So 36,000, rate of interest is 10%. Multiplied by how much? Middle है तो? How much average month? 1,800. Multiplied by what? 6, no. Yes, 1,800. Karthik? Yes, ma'am. Answer? Yes, ma'am. कहाँ गायब हो गया? Finished? See, now 7, if the याद करने पड़ेंगे इसमें. क्या हुआ? मैम कितने मंथ याद करने पड़ेंगे? कितने months? पहले क्वार्टर आ जाता है, कभी कुछ आ जाता है. See, what happens is, उन लोग आपको sum कुछ भी दे सकते हैं. For the small calculation, you should have an idea. Correct? अगर regular uniform months है तो कोई problem ही नहीं है. If in any case they are not giving you any information related to drawing, then you should know what other things should be followed there. Yes, ma'am. Yeah, this is last. Don't worry. If fixed amount is withdrawn during 6 months. During 6 months means 3.5, and for the middle of the year it is 3, and the end of the month it is 2.5. Okay. See the illustration 33. Ansh, look here. Yes, ma'am. You tell me first. For every month, what is the calculation for every quarter? For every quarter and half. Yes. Beginning में क्या होगा? ये क्वार्टर के ना, क्वार्टर में बिगनिंग में 7.5. Yes, sir. हाँ. Quarter. Beginning, every beginning of the month, how much it will be? 7.5 months. हाँ, beginning of each quarter ना. How much it is? 7.5, no? हाँ मैम, वही तो बोलो. Okay. अच्छा. And in the middle? 6 months. बोलो. In the middle? 6 months. 6 months. 6 months. Okay. At the end? 4.5.
4 point काय 40 के लिए 4.5 है श्योर. हाँ मैम लाइक 4.5 वही ओके. और अगर हाफ रहेगा तो दिस विल बिकम हाउ मच 3.5. This will become how much 3 and this will become how much 2.5. Easy है. कार्तिक यस मैम. स्क्रीन क्यों चेंज कर रहा है? मैम क्या? गेम नहीं खेल रहा है ना स्क्रीन पर? नहीं मैम. गेम तो नहीं खेल रहा है ना? नहीं मैम, मैं कोई गेम नहीं खेलता. ओके. नाउ इलस्ट्रेशन 33. आज बोर लग रहा है क्यों? पता नहीं क्यों मैम, अकाउंट्स बोरिंग ही है. Accounts is not boring unless you take interest from your own. Okay, we'll start. When drawings are made for the period of 6 months only. Okay, ध्यान से पढ़ना हाँ. We'll make it quite interesting. Amar Bridge and Chan started a firm on 1st of October 2020, sharing profits equally. ठीक है, 1:1:1 will be their profit sharing ratio. Amar drew regularly 4,000 in the beginning of every month. For the 6 months ended, every month for 6 months ended 31st March 2021. First case कौन सा है? रेगुलर एवरी मंथ विड्रॉल्स हो रहा है और बिगिनिंग में हो रहा है, राइट? क्वार्टर वाला सम है क्या? नहीं. ओके. 6 मंथ वाला है ना? यूनिफॉर्म करेक्ट. 6 मंथ. 6 मंथ्स वाला नहीं है, ऑल मंथ्स. फर्स्ट केस है ये. एवरी मंथ ही इज विड्रॉइंग द मनी. मैम बट फर्स्ट केस में तो बिगिनिंग और एंड आता ही नहीं है ना. देखो सुनो, कार्तिक क्या करता था पहले? एवरी मंथ विड्रॉल्स कर, एवरी मंथ. ठीक है. अगर Yes. एवरी मंथ विड्रॉल्स करते हैं और हमारे पास वहां पर 3 ऑप्शंस होते हैं, एट द बिगिनिंग, एट द मिडिल एंड एट द एंड. ठीक है. सेकेंड ऑप्शन क्या है हमारे पास? क्वार्टर. करेक्ट. क्वार्टर Yes. में भी 3 बाइफरकेशंस है, एट द बिगिनिंग, एट द मिडिल एंड एट द एंड. अंडरस्टूड? Yes. अभी जो थर्ड है वो क्या है? हाफ वाला. हाफ मतलब सारे सिर्फ 2 ही बार कैलकुलेशन होगा. हाफ मतलब मल्टीप्लाइड बाय ओनली 2. whatever amount multiplied by only 2. Here whatever amount multiplied by 4. 4. Here whatever amount multiplied by 12. 12. Getting? Yes ma'am. अभी समझा? Yes ma'am. In this case 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, in this case 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई. यहाँ पर हम लोग ने क्या क्या किया था? एट द बिगिनिंग कितना था एवरेज मंथ? किधर? इधर एवरी मंथ 4 या 2. No, 6.5. 6 इधर and 5.5. 5.5. यहाँ पर कितना था? 7.5. हाँ. 6 और यहाँ पर 4.5. ठीक है. यहाँ पर जो बाइफरकेशन है, यहाँ पर कितना है? 3.5, 3 and 2. हाँ समझा. इजी है. अभी समझा ना? Yes ma'am. ओके. नाउ इसमें जो पहला केस दिया है सेम. Okay, Amar Bridge started a firm on 1st of October,
सी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, Yes, तो हम ma'am. कभी स्टार्ट किया उन लोग ने 1 अक्टूबर, तो उन लोग का ईयर एंड कभी होगा वो देखते हैं हम लोग क्या बोलते हैं। ओके, अमर विड्रू रेगुलरली 4,000 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। ठीक है, एवरी मंथ बोला है, मतलब 4,000 मल्टीप्लाइड बाय हाउ मच इट विल डू अंश? इधर देखो मेरे पास, यस मैम। 4,000 मल्टीप्लाइड बाय ये एवरी मंथ बोला है। हाँ, तो इंटू 6 होगा ना? यस कार्तिक, 4,000 इंटू 6। 6 नहीं 12 every month के लिए। 12, yes 12, and at the for 6 months ended 31st March 2021। लेकिन वो लोग ने क्या बोला है वहां पर, 6 months के लिए लिया है, so we will definitely multiplied by 6। 6 अगर क्वेश्चन में नहीं बोला होता 6, then we कितना करना था, मल्टीप्लाई बाय 12। 12। ओके, Bridge drew regularly 4,000 at the end of every month for the 6 months ended 31st March। ओके, ये एंड वाला है। Chant drew regularly 4,000 in the middle of every 6 months for the 6 months ended 31st March 2021। Calculate interest drawing at the rate of 5% for the period ending 31st March 2021। ठीक है, अभी यहाँ पर एवरेज पीरियड हम लोग को ऑलरेडी पता, अगर हाफ ईयरली कैलकुलेशन है तो कैलकुलेशन हम लोग को कैसे करना है। ओके, कौन सा हम लोग लेंगे, लास्ट वाला एग्जांपल फॉर द 6 मंथ्स, राइट। अमर, व्हाट इज द अमाउंट फॉर द अमर? 24 4,000। 4,000 for how many months? 6 months 6 months. It came to 24,000. Interest rate was 5%. At the beginning कर रहा था, middle और end? beginning And beginning. Beginning. So for 6 months कितना है उनका interest? 3.5 upon 12. Is this correct? yes ma'am Ansh, यस मैम। Karthik, yes ma'am right? Okay, wait, don't do the calculation part. Bridge. How much is the amount for the bridge? 4,000 for every month for the 6 months. 4,000 for 6 months. 24 into 5 upon 100. But what time was at the end of every month? End of every month means how much? 2.5, no? Bridge and Chan. in the middle What is the amount for the Chan? ma'am same Same. 4,000. $24,000 into 5%. And when he used to withdraw, at the end, in the middle or beginning, Chan? Middle of every month. Middle, very good. Yes, it means can I say 3 months? Yes मैम। So, Karthik, tell me calculation for the first. ma'am 350 How much? 350 Yes. Next, 250. 250 Ansh, tell me answer for this bridge. 250. 250, right? Karthik, next one. 200 200. 200.
200 नहीं है आंसर. 300 hours. Understood now? Calculation करना है. Yes, ma'am. See, important note is given there. If the date of drawing is not given and accounting period is less than 6 months, then the interest on total drawing is calculated for half of the accounting period. Okay? If the date of the drawings are not given and still you have to calculate the interest for the drawings, we will use this pattern only. 3.5, 3 and 2.5. Followed? Yes, ma'am. See one more example. Illustration 34. अंश and कार्तिक एक बार रिवाइज कर लो वापस. Which months, how many, what are the average periods and everything. हाँ बोलो कार्तिक. हाँ मैम, रिवाइज करवाओ मैम. Okay. Finished? Yes, ma'am. Ansh finished? Yes, ma'am. Okay. Karthik, tell me two questions Yes, to ma'am. you. What will be the average months for the quarter calculation if the amount is drawn every middle of the year? Quarter Middle. calculation every middle of the year. Ma'am, middle it is 6. Okay. And if it is half yearly, middle, Half middle it is 3. very good. And at the end of every month, half yearly, Half yearly at the end of the month it is 2.5. very good. Okay. And if amount is withdrawn on a regular basis every end of the month, Every end of the month it is 5.5. great. Ansh, Yes, start. ma'am. Amount withdrawn on regular basis every beginning of the month. Every beginning of the month. Regular basis. इधर देखो कैमरा में. हाँ, beginning of the month. 6.5 months. 6.5. Yes, ma'am. Write it, Karthik. Ma'am, beginning और कौन सा beginning and Beginning. Regular. regular beginning it is 6.5. Okay. And for the quarterly period, end of the every month. For Ansh quarter, ऊपर देखो इधर. quarter, end of every month. 5.5. 5.5 months. 2.5. हाँ, 4.5. Sorry. 4.5. अबे नहीं 2.5. No, quarterly, every end of the every month, 4.5. 4.5. Ansh is right. Okay. Okay. Quarterly, every beginning of the month.
क्या मैम? Quarterly, every beginning of the month. 7.5 months. Okay, great. Half yearly, every beginning of the month. Half. ये 3.5. Great. Half yearly, every end of the month. 2.5. Middle of the month. मिडल ऑफ द मंथ किसका? How much? मिडल ऑफ द मंथ किसका मतलब हाफ ईयरली का ही ना? Half yearly, middle of the Three. month. Three. 3. Okay, and quarterly, middle of the month. 6. 6. Great. And if no information about the date of drawing is given, how much month calculation we will make? मैम हाफ ईयरली वाला. हाफ. Yes, 6 upon 12. Okay. See, same as what illustration 34. थोड़ा थोड़ा clear हुआ? Yes मैम. Okay. Illustration 34. Calculate interest on drawings of Rakesh at the rate of 10% per annum for the year ended 31st March 2021 in each of the following alternative cases. If his drawings during the year were 30,000, अगर पूरे साल का drawing 30,000 होता and any information is given related to the date of drawing, क्या नहीं मैम? दिया. anything is given? Nothing. No मैम. Any information for the date? Okay. So we will consider half yearly calculation, right? Yes मैम. Okay. So 30,000 multiplied by 10 upon 100 into 6 upon 12. Easy है ना? Case number 2, if he withdraws 2,500 per month during the year, ठीक है? Any Same. information is given about the date of drawings and anything? So we will make calculation as per half yearly. Yearly. Okay. So 2,500 multiplied by how much? 12 months or 6 months we will do? 6 upon 12. 6 upon 12. 6 upon 12. लेकिन 2,500 पूरे साल में ड्राइंग्स किया होगा ना उसने every month. So 2,500 Into multiplied 12. by 12. Okay. Second case Yes. करके दिखाओ. नहीं मैम समझ गए. 2,500 into 12. Whatever amount will come, that 30,000. will be multiplied by rate into 6 upon 12. Clear? Yes मैम. Understood? Okay. Illustration 35 करें. कुछ डाउट है क्या? देखो इंटरेस्ट चेक. No मैम. No doubt. Solve illustration 35. Illustration 35. Solve. Yes मैम. One. मैम इसमें मंथ नहीं आएगा क्या? By month, they have given you annual drawings of Anita. You'll multiply 2,50,000 into 12. मैम इलस्ट्रेशन 35 में भी तो दिया था कि उसकी ड्राइंग्स पूरे साल के लिए 30,000 है. हाँ, तो यहाँ पर भी दिया है ना. During the year, it is 2,50,000. यस मैम. तो फिर 6 upon 12 क्यों नहीं आएगा किसमें? इस इलस्ट्रेशन 35 में?
क्यों इसमें नहीं करना है? कैलकुलेट अनीता's drawings at the rate of 10% if she withdraws 2,50,000 during the year. वहाँ ऊपर क्या दिया था वो लोग ने? See, sentence line. The rate of interest is given without the word per annum. Interest is charged without considering the time factor. ऊपर क्या दिया? मैम म्यूट हो गया आपका. Drawings were made throughout the year and interest of the drawings is calculated for an average period of 6 months. Question में दिया था ना average period for 6 months. आंसर आया? यस मैम. Finished? What is the amount? Yes मैम. 25,000. Okay. I want you all to go through this journal entries and just find out whether you know all these entries. The journal entries to record the interest on drawings. When partners' capital account are fixed, and when the partners' capital accounts are fluctuating. Okay. In case of fixed partners' capital account, partners' current account debit to interest on drawings. Yes मैम. Okay. When we charge interest to the partners, we always debit the partners' capital account, right? और जब भी अगर fixed account है तो we always make all entries related to partners in current account. So partners current account debit to interest on drawings account, and then interest on drawings account debit to profit and loss appropriation account. So transfer करते हैं हम लोग, right? And in case of fluctuating capital, entries क्या करेंगे कार्तिक? Yes ma'am. In case of fluctuating capital method, how you will pass the entry? मैम कैपिटल अकाउंट होगा ना. Interest on drawings. मैम Partners capital account debit. debit to interest To? on drawing. Okay, very good. And then after that, Interest on drawing debit to appropriation account. very good. Ansh, tell me why appropriation is credit here. कहाँ पे? तो फिक्स में ना. Why appropriation is credit? Huh? Yes, Karthik. Ma'am, because it is a income for the firm. Why it is credit? Ma'am, because it is income for the firm. Yes, it is income for the firm. Right, Ansh? अगर ये interest on capital होता तो appropriation debit होता, because interest on capital is an expense to the firm. Okay? Accounting treatment for the salaries also you know. जब भी हम लोग सैलरी देते हैं, जब भी हम लोग कमीशन देते हैं तो क्या करते हैं? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा अंश? इन केस ऑफ सैलरी टू द पार्टनर्स, क्या मैम? जब भी हम लोग पार्टनर को सैलरी देंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विल गेट क्रेडिटेड और डेबिटेड? It will get credited. Yes, very good. Okay. Fine. So this other topic we will do in the next lecture. कोई डाउट्स है तो पूछ लो. ओके, गुडविल स्टार्ट करना है नेक्स्ट लेक्चर में.
हाँ मैम कर दो। हाँ, और मैम वो Okay. क्वेश्चन आ गया है पूरा अकाउंट का। Tell me. हाँ Tell एक me. मिनट। For this exam or for your boards? फॉर दिस एग्जाम किधर है? वो आया था, एक मिनट। मैम सेक्शन ए में पार्टनरशिप अकाउंट है, गुडविल है, एडमिशन ऑफ पार्टनर है, और Hmm. फिर फाइनल अकाउंट ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। Final account of joint stock company. Okay. और हाँ एक मिनट मैम, मैं ग्रुप में भेज देता हूँ। ठीक है चलेगा। एडमिशन ऑफ पार्टनर्स हुआ है तुम लोग का? नहीं मैम। आता है थोड़ा सा, थोड़ा। अबे ये पोर्शन है किधर वैसे? ये वो पता नहीं, मुझे तो ड्राइव में आया था मेरे। ओके। ये बहुत सेंड सारा। किया ना अभी ग्रुप में, सेंड किया ना? हाँ मैम। ये सब चैप्टर अभी एग्जाम में आने वाले हैं। हाँ। अभी 1-2 हफ्ते बाद। 2 अगस्त। यस मैम। ओके। अब से 10 दिन बाद एग्जाम है। ओके फाइन, गुड। बाय, टेक केयर। बाय।